Hello students, myself Kk Mehta, civil engineer DVC. I have done my master degree from IIT Durgapur. I have a 13 years experience in field as well as in the field of maintenance. So actually, uh, it's a part of my hobby, and actually in my life I have two hobbies. One is to play cricket and other is to teach engineering students or to guide them to achieve their goal in their life. So in this series, I want to explain one of the important topic of civil engineering, or you can say one of the important topics of soil mechanics called compaction. तो दोस्तों बात आती है कि आखिर compaction जो है वो होता क्या है. First of all, I want to write the name of the topic on my whiteboard. The name of the topic is compaction. एक्चुअली फ्रेंड्स, अगर आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं या फिर आप फील्ड में जॉब कर रहे हैं, चाहे आप जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, आपको कहीं ना कहीं इस कॉम्पैक्शन वर्ड से इनकाउंटर होना ही पड़ेगा. बिकॉज चाहे आप एक बिल्डिंग का प्रोजेक्ट कर रहे हो या एक हाईवे का प्रोजेक्ट कर रहे हो या रेलवे का एम्बैंकमेंट कर रहे हो, वेदर यू आर डूइंग अ प्रोजेक्ट ऑफ अ टनल, वेदर यू आर डूइंग अ प्रोजेक्ट ऑफ अ कैनाल, वेदर यू आर डूइंग अ प्रोजेक्ट ऑफ अ dam, whether you are doing a project of a nuclear power plant or project related to the thermal power plant, आपको ये जो टर्म है compaction बड़ा ही अहम है. और कहीं ना कहीं आप साइड में जाओगे, आपको इस टर्म से खेलना ही पड़ेगा और इनकाउंटर होना ही पड़ेगा. तो मैं चाहता हूँ कि इस टर्म को पहले इस तरह से समझो कि ये जो compaction है ये मेरे फील्ड में ज़रूरी क्यों है और क्यों करते हैं. वाई डू वी डू कॉम्पैक्शन. तो मेरा मकसद है इस कॉम्पैक्शन करने का कि जब भी किसी भी सॉइल पे अगर स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं तो कहीं ना कहीं वो सॉइल एक टाइम में वो लूज़ होता है, और उस सॉइल को मुझे पहला द प्राइम एम शुड बी दैट सॉइल शुड बी वेल कॉम्पैक्टेड. तभी आप किसी भी स्ट्रक्चर को खड़ा करोगे तो दैट विल बी स्टेबल एंड दैट विल बी स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम. अदरवाइज अगर किसी लूज सॉइल के ऊपर कोई स्ट्रक्चर अगर बनाते हो तो कहीं ना कहीं फेलियर का चांसेस हमेशा बनी रहेगी. इस वजह से कॉम्पैक्शन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यू कैन से द टर्म है सिविल इंजीनियरिंग में. लेट अस फर्स्ट डिफाइन व्हाट इज कॉम्पैक्शन. सो लेट मी राइट द डेफिनेशन ऑफ द कॉम्पैक्शन. इट इज द प्रोसेस ऑफ making the soil dense artificially with applying mechanical equipment like roller to decrease the wide ratio of soil compressibility and permeability of soil. In order to increase effective stress, shear strength, bearing capacity, degree of denseness,
degree of denseness and stability of soil. फ्रेंड्स, अगर मैं कॉम्पैक्शन करता हूँ तो जो सॉइल की पैरामीटर है, द इम्पॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ द सॉइल, वॉइड रेशियो, कंप्रेसिबिलिटी एंड परमेबिलिटी, ये आपको डिक्रीज करेगी. एंड द पैरामीटर विच इज गोइंग टू इंक्रीज इज effective stress, shear strength, bearing capacity, degree of denseness and stability of soil. तो void ratio को अगर मैं डिक्रीज करता हूँ तो अल्टीमेटली हमारी जो डेंसिटी है सॉइल की वो बढ़ जाएगी. आई हैव एन एक्सप्रेशन फ्रॉम इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल. व्हाट इज दैट? गामा डी ड्राई डेंसिटी इक्वल्स टू G gamma W 1 plus E. So clearly you can see here is that if you are going to decrease this value E, ultimately your density is going to increase. And what is G here? G is your specific gravity of soil. Gamma W is the unit weight of water. So you can say that gamma D increases if you decrease E, void ratio of soil. void ratio of soil. मैं कह सकता हूँ कि अगर void ratio घटाओगे तो आपकी जो है डेंसिटी क्या करेगी? बढ़ेगी. And what is void ratio here? You know that E equals to volume of void by volume of solid. कहने का मतलब है अगर void ratio को घटाते हो अल्टीमेटली आपकी डेंसिटी बढ़ जाएगी. उससे क्या होता है कि सॉइल का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या देख रहे हैं कि वॉइड रेशियो घटेगी. कंप्रेसिबिलिटी. अब व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी हियर? कंप्रेसिबिलिटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ compaction and consolidation. I will define the term consolidation later on. First I want to clear the compaction. So compressibility is the combination of compaction and the consolidation. And what is permeability? Permeability is the ability of a water to pass through a porous medium. That is your permeability. So अगर इन चीज़ों अगर घटेंगे ऑटोमेटिकली आपकी जो है अफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ेगी. क्या बढ़ेगी? अफेक्टिव स्ट्रेस you know it is sigma, and it is, what is that? It is density of soil. You can say gamma into some depth, you can say Z. This is the density of soil and Z is the depth of any point. जिस लोकेशन पे आप अफेक्टिव स्ट्रेस निकाल रहे हो तो मैं देख सकता हूँ कि योर अफेक्टिव स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द गामा. सो यू कैन से दैट, एंड गामा इज व्हेन इट इज इंक्रीजिंग, व्हेन वॉइड रेशियो इज इंक्रीजिंग, वॉइड रेशियो इज डिक्रीजिंग, योर ड्राई डेंसिटी इज इंक्रीजिंग. व्हेन योर अफेक्टिव स्ट्रेस इज इंक्रीजिंग, योर डेंसिटी इज इंक्रीजिंग. सो अगर वॉइड रेशियो को घटाते हैं, और वॉइड रेशियो को घटाएंगे कैसे? अगर आपको फील्ड में वॉइड रेशियो घटाने के लिए जो सबसे आपके पास अवेलेबल एक इक्विपमेंट होगा और जो मोस्ट वाइडली यूज्ड होगा, दैट इज़ कॉल्ड द रोलर. आप देखे होंगे जब भी कोई हैवी प्रोजेक्ट हो रहा होगा आपके कहीं भी अर्द गिर्द, तो देखे होंगे एक रोलर का यूज़ करते हैं. व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दैट रोलर? जब भी मैं सॉइल को कॉम्पैक्ट कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं सॉइल के अंदर क्या होता है? एयर होता है और वाटर होते हैं. तो कॉम्पैक्ट होने से क्या होता है? उनकी जो वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है. वॉल्यूम डिक्रीज क्यों हो रही है? ड्यू टू एक्सपल्सन ऑफ एयर एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल सॉलिड्स. तो कह सकते हैं कि वॉइड रेशियो घटाने के लिए हमारे पास जो इक्विपमेंट अवेलेबल है दैट इज रोलर, और इस माध्यम से क्या करते हैं हम लोग? वॉइड रेशियो घटाते हैं, सो दैट माई अल्टीमेट गोल इज टू increase the strength of the soil
जो कि मुझे कब काम आएगा, वो जब भी कोई भी स्ट्रक्चर को मैं खड़ा करूँगा वो स्टेबल रहेगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ कि व्हाट इज़ कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन इज़ द डिक्रीज इन वॉल्यूम ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल एफर्ट ड्यू टू एक्सपल्सन ऑफ एयर फ्रॉम द soil mass. So this is one also definition of the compaction. So write down this definition again. So you can write is that decrease in volume of soil mass due to expulsion of air is called compaction. तो क्या कर सकते हैं हम लोग कि हमारे पास एक सपोज दिस इज अ सॉइल मास just for a moment, and this is and you know that soil is composed of, suppose this is a soil packet, you can say, and all voids, these all voids are filled up with water and air. So this soil mass, you can say this is a soil solid, it is all air plus water, and when you will apply the load on the soil, suppose you are applying a load here, just for a moment, just understand it clearly. You are applying a load, what will happen here? You will get a soil mass of reduced volume. You will get a soil mass of reduced volume. So suppose this is a soil mass, you will having a soil mass of reduced volume. So you can say that this is the difference, you can say, and this amount is being decreased. This is the reduce in volume, तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, all are voids left with water only, अभी क्या हो रहा है कि जब आपने लोड को अप्लाई कर दिया, जितने भी इसमें एयर प्रेजेंट थे ये निकल गए, आपके वाटर बच गए। अब क्या हो रहा है, जब एक्सपल्सन ऑफ एयर हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, इट मीन्स this is the process of compaction. Okay, and you can say one important difference is that compaction is an instantaneous process. This is, you just write here three-phase system of soil, three-phase system. So जब compaction कर रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। आप लोड अप्लाई करोगे, जो भी वॉइड्स में एयर प्रेजेंट होंगे एक्सपेल्ड हो जाएंगे, दिस इज़ वन प्रोसेस। एयर तो निकल गए, विथ पासेज ऑफ टाइम जब लोड उस पर आप अप्लाई करके रखोगे, वाटर भी अब इस सॉइल मास से धीरे धीरे निकलना स्टार्ट हो जाएगा, एंड इट इज़ टाइम डिपेंडेंट फिनोमिनन। वाटर निकलना इतना आसान नहीं है फ्रॉम द वॉइड ऑफ द सॉइल, इट टेक्स लॉन्गर टाइम, इट टेक्स इनफाइनाइट टाइम। और इस चीज़ को जब ये हैपनिंग होती है, ये प्रोसेस expulsion of water, then the process name is called consolidation. So your new term come here is that, what is consolidation? Consolidation क्या है? What is consolidation? So you can write the definition,
decrease in volume of soil mass, decrease in volume of soil mass due to expulsion of water is called consolidation. अगर एक्सपेल्सन ऑफ वाटर से अगर हमारा वॉल्यूम डिक्रीज करता है then it is called consolidation. And what is the next difference between the consolidation and the compaction? It is a time dependent phenomenon. ये क्या होता है दोस्तों? ये एक टाइम डिपेंडेंट फिनोमिनन है क्योंकि इसको हैपन होने में बहुत टाइम लगता है. Now the next difference is that when consolidation is happening, soil system is completely in saturated state. जब आपका कंसल्टेशन की प्रक्रिया पूरी हो रही है उस समय सॉइल आपका पूरी सैचुरेटेड रह रहा है, मीन्स पूरे द वॉइड्स आर फिल्ड अप विथ वाटर. अब अगर इसमें अप्लाई करते हो लोड, सपोज दिस इज नाउ दिस हैज बिकम द टू फेज सिस्टम, दिस डायग्राम हैज बिकम और दिस सॉइल मास हैज बिकम टू फेज सिस्टम. And now if you apply the load here to decrease the volume, it will take a longer duration. It will take a longer duration. After this application of load, you will get a soil mass of lesser volume. From this you just make here is that there will be decrease in volume. Again there will be decrease in volume. So this is the soil mass. And the voids are filled up with water. So again you have a decrease in volume here. This length of height is reducing. So what is the difference between the compaction and the consolidation is that compaction is a process due to expulsion of air. Consolidation is a process due to expulsion of water. This is the first difference. In compaction is an instantaneous process. When you apply the load, the volume is going to decrease suddenly. This is the one difference. But in case of a consolidation, it is a time dependent phenomenon. ये बहुत टाइम लेता है इस चीज़ को होने में. So this is the two difference. The third difference is that the soil is in a three phase system. Means यहाँ पे completely saturated नहीं रहेगा when the compaction is happening. But when consolidation is happening, soil will be in a two phase system. Because इसके बाद आपका जो voids हैं ये only filled up with water रहेंगे. तो फ्रेंड दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द compaction and the consolidation. नाउ अब मुझे पढ़ना ये होगा कि compaction अगर मुझे फील्ड में करनी है टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल तो मुझे कितना करना पड़ेगा. क्या मुझे एक बार रोलर चलाना पड़ेगा, दो बार रोलर चलाना पड़ेगा, तीन बार चलाना पड़ेगा, चार बार चलाना पड़ेगा, कितने वेट का रोलर होगा, कितना कॉम्पैक्टिव एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्या हैवी रोलर्स का यूज़ करना है या मीडियम वेट का करना है या लाइट वेट का करना है. इन सब चीज़ों को, इन सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको जानने के लिए you will have to go through some laboratory experiment. And the laboratory experiment available are of four kinds. And this experiment is invented by R. Proctor, a US based civil engineer. He has invented this process to find the characteristics of the compaction.
So just write down, to know the compaction characteristics, to know the compaction characteristics of soil, we have 4 laboratory methods. First one is standard Proctor test. Second one is Indian standard Proctor test. Third one is modified Proctor test, and the fourth one is Indian standard Proctor test. Students, I have 4 methods to find the compaction characteristics of the soil. The first one is the standard Proctor test, Indian standard Proctor test, modified Proctor test, Indian standard Proctor test. Indian standard Proctor test is also called light compaction test. So write down here, or light compaction test. And Indian standard modified Proctor test. Here I have written, I have left the Indian standard modified Proctor test, and this test is also called heavy compaction test. Heavy compaction टेस्ट. कहने का मतलब है ये टेस्ट मैं उस समय करूँगा जब मुझे अनइम्पॉर्टेंट वर्क्स, नॉर्मल वर्क्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग करना है. देन आई एम गोइंग टू यूज दिस स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट, इंडियन स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट, दिस सेकंड वन. If I am going to do some important works of civil engineering, some heavy works, suppose for you are doing a job for the military, you are doing a job for some nuclear power projects, you are doing a job for high-rise buildings, you are going to do the job for, you are going to work related to your highway embankment or railway embankment, then you are going to use this Indian standard modified Proctor test or heavy compaction test. So for unimportant works you can say this Indian standard second one is being used, and for the important Indian standard modified Proctor test or heavy compaction test is being used. Light compaction का मतलब क्या होता है? We are using a lightweight hammer, and for this Indian standard modified fourth one heavy compaction test we are using a heavy weight of hammer. So let us first discuss the first one, standard Proctor test. We will be discussing all 4 methods one by one. So let us first discuss Indian standard Proctor test. The first method is standard Proctor test. Right on the first point, this method is invented by R.R. Proctor, an American civil engineer. What we are doing in this test? Actually, we are using a mold, a hammer and a soil sample for carrying out this test. So right on the second point here, it consists of steel mold
steel mold of capacity 945 cubic centimeter cc, 945 cubic cc, soil sample is filled up in 3 layers. Each layer is compacted. Each layer is compacted by applying 25 numbers of blows Each layer is compacted by applying 25 numbers of blows with a hammer of 2.5 kg and the free fall height is 305 millimeter. So students, what is happening here? The soil sample which you will be using for carrying out this standard Proctor test should be passing through the soil sample. The soil sample should be passing through 4.75 millimeter sieve. तो मैं इस टेस्ट को कैसे करता हूँ, कैसे क्या प्रोसेस है फील्ड में, बिकॉज ये टेस्ट आपको बहुत करना है. जब भी आप कोई प्रोजेक्ट करोगे कहीं ना कहीं आपको इस टेस्ट को करना ही पड़ेगा. तो मैं क्या इक्विपमेंट यूज़ कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. तो पहले तो मैं यहाँ लिख दिया कि आपके पास यू हैव अ स्टील मोल्ड है, आपके पास सॉइल सैंपल है. सॉइल सैंपल को 3 बार में लेयर में फिल करनी है. ईच लेयर को 25 नंबर ऑफ ब्लोज दे करके उसे कॉम्पैक्ट करनी है. आपका हैमर जो होगा, द वेट ऑफ द हैमर इज 2.5 kg एंड द फ्री फॉल हाइट इज 305 millimeter. द सॉइल सैंपल शुड बी पासिंग थ्रू 4.575 millimeter. तो जब मैं इस टेस्ट को कैरी आउट करूँगा तो मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले मेरे पास एक सॉइल सैंपल होगा. मुझे सपोज दिस इज अ सॉइल सैंपल and suppose this is my, you can say this is the surface of the laboratory, the plane surface, the horizontal surface, and here this is a soil sample. You can say this is a soil sample that you are going to use for this test. So the soil sample should be passing through 4.75 millimeter, and you have a, here you are having a empty mold. This is an empty mold. This is the empty mold of 945 cc capacity. And the next step, what is the next step here? Now fill this mold in a layer wise system with the soil sample. This is your mold. Just fill this soil sample to this mold. This is my soil sample. अब मुझे करना क्या है? Suppose this is my mold here. You have filled it with the first layer of sample. Now आपको compaction करनी है. Compaction करनी है मतलब, suppose here is one man
Here you can see a lab technician is standing here. This is a lab technician. You can just, I'm drawing this for understanding purpose, and this is his hand, and this is the, suppose, hammer. This is a hammer of 2.5 kg, and just I want to show the free fall height, so that's why this is the 305 millimeter is the free fall height. Again, you have to, this we have compacted the first layer. You have compacted the first layer using this hammer, giving 25 numbers of blows. You have to apply 25 numbers of blows in each layer. So now this has been compacted the first layer. This is the first layer. Just fill it this sample again. Now again fill the sample here with the second layer. This is the first layer, and again you have to apply 25 number of blows. This is a hammer, same this hammer I'm using here, and now my second layer is ready. So this is my first layer. It's compacted by giving 25 number of blows. This second layer again, this is compacted by applying 25 number of blows. Now you fill again this soil sample to this steel mold. So again you apply you are applying here the hammer one. You are applying the hammer here, and now what you are getting here is that a mold filled up with compacted soil. This is the first layer, this is the second layer. Well compacted soil. This mold is containing well compacted soil. This is my first layer. You can say this is my second layer. This is the third layer, and this is well compacted soil filled in mold. ये मैं प्रक्रिया यहाँ पर कर रहा हूँ. तो मैं इस चीज़ को कर क्यों रहा हूँ? What I am doing is here is that I have my prepared sample here. I am filling this sample to this empty mold. इस empty mold में भर रहे हैं. फर्स्ट लेयर हमने भर दिया सॉइल सैंपल को. भरने के बाद क्या कर रहा है? टेक्नीशियन इज अप्लाइंग हैमर फॉर कॉम्पैक्टिंग दिस लेयर बाय गिविंग 25 नंबर ऑफ ब्लोज. मैं कितना ब्लोज दे रहा हूँ? 25 नंबर. सो टोटल आई एम गिविंग 75 number of blows. 25 in the first layer, 25 in the second layer, and 25 in the third layer. If you will all these three number of blows, you will get 75 number of blows. So this way we will use in one expression for finding the compactive energy. That's why I am telling you, in this case I am applying 75 number of blows. तो अगर मैं कर क्या रहा हूँ इसमें, आपने तो कॉम्पैक्ट कर दिया. कॉम्पैक्ट करने के बाद क्या करना है आपको? कॉम्पैक्ट करने के बाद इन लेबोरेटरी यू विल हैव अ वेइंग मशीन. ये देखो, एक वेइंग मशीन रहेगा और आपका ट्रे रहेगा यहाँ पर. दिस इज अ ट्रे, एंड यू टेक आउट दैट compacted soil, and take the weight in weighing machine. This is a compacted soil. This is a tray, and this is a weighing machine. You can say this is weighing machine, electronic weighing machine we will be using in laboratory for finding the weight of the compacted soil. So let W1 weight of empty mold, W2 is the weight of empty mold plus
weight of compacted soil. W equals to W2 minus W1 equals to weight of compacted soil. Compacted soil. अब निकाल सकते हो. It's very easy. W1 is the, suppose W1 is the weight of empty mold, this empty mold, and W2 the total weight of this one. So you can say, you can write here, this is my W1 and this is my W2, and W is the only weight of compacted soil. So you have an expression, bulk unit weight of soil, gamma T equals to W divided by V, where V is the volume of mold, that is 945 cubic centimeter. So from this expression and from this experiment, you can find very easily the value of gamma T. And I have an expression, the relationship between gamma T and the gamma D. What is that expression? What is that expression? I think you must be knowing this expression from the index properties of soil. We know gamma T equals to gamma D 1 plus W. Do you understand? Where gamma D is dry density of soil, and W is water content of soil, water content in the soil. So जब भी मैं इस compaction का standard proctor test करूँगा, तो मुझे जो चाहिए, my aim is to find the dry density of the soil. First we are going to find the bulk unit weight with the bulk unit weight by using this W by V simple formula, and by applying or by using this expression bulk unit weight with this gamma D, oh sorry, I have written a wrong formula here. This will be gamma D here and gamma T will be here, so just correct it, gamma D, gamma T, so it's okay now. My aim is to find the degree of denseness in terms of dry density. My degree of denseness को dry density में represent करना है मुझे. इस वजह से मैं इस टेस्ट से गामा डी की वैल्यू निकाल रहा हूँ. I am expressing the degree of denseness or maximum compactness of the soil in terms of dry density. Why we are doing this? Why we cannot express in terms of gamma T, and why we are expressing in terms of gamma D? Just because it tells us about the maximum compactness and maximum density. This gamma D tells us about the maximum density at some moisture content, at some constant moisture content. You cannot say that a gamma D is at it is a dry density, means it is in soil is in a dry condition. No, it's wrong. Soil will never be in a dry condition. Soil will be in a three-phase system. So gamma D is representing the degree of compactness, maximum degree of compactness in terms of dry density. Okay, so write down the point here. Just I think you must have made this diagram. And the new term that I have introduced here is that water content. How will you find this water content? So write down here the water content of the soil can be found out from
using oven dry मेथड। सो अगर वाटर कंटेंट निकालना है, आप इस चीज़ को जानते हैं कि जो कॉम्पैक्टेड सॉइल हमने लिया था यहाँ से, दिस कॉम्पैक्टेड सॉइल, इसका कुछ अमाउंट को मैं ओवन ड्राई में रखूँगा और वाटर कंटेंट को मैं निकाल सकता हूँ। बाय यूजिंग दैट वाटर कंटेंट आई कैन फाइंड दिस ड्राई डेंसिटी। सो राइट ऑन द नेक्स्ट पॉइंट हियर, ड्राई डेंसिटी is not the density of soil, density of soil in dry state. Dry density gamma d is degree of maximum compactness of soil, maximum compactness of soil. अब मुझे क्या मिल गया? Now you are having a data with water content and now you are having data with dry density. और इस dry density, ऐसा नहीं कि मैं एक सैंपल का किया, dry density वाटर कंटेंट निकाल दिया, my job is done. No, it's not. आपको कम से कम 4 से 5 डेटा, इट मीन्स 4 से 5 सैंपल लेकर आपको टेस्ट करना पड़ेगा और उन टेस्ट के डेटा को वाटर कंटेंट और ड्राई डेंसिटी के ग्राफ रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। एंड विद द हेल्प ऑफ अ कॉम्पैक्शन कर्व यू विल फाइंड अ न्यू पैरामीटर कॉल्ड ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू हियर? Now I am left with two data. First one is, now I have two parameter. First one is gamma d, second one is w. So let us assume this is my sample 1, and you have tested at some constant water content, and the water content is W is 5%, and for this you are getting a density of, gamma d. Suppose, just for a moment, suppose you are getting a density of 12 kilonewton per meter cube, and you are having again second sample. You are having a sample number 2, and you have added, you can say 10% of water for preparing the sample, and when you are testing in the proctor test, you are getting gamma d equals to 15 kilonewton per meter cube. Again you take the third sample, sample 3, and water content is 15%, just assumed I have, and you are getting gamma d is you can say 18 kilonewton per meter cube. Again you are taking sample 4, this is sample 4, W equals to 20% and gamma d equals to 21 kilonewton per meter cube. Again you have a sample 4, sample 5, water content is 25%, and you can say, here you can say it may get reduced. Here is the water content is suppose 15 kilonewton per meter cube, and here it is 11 kilonewton per meter cube. So you have taken 5 samples
at more water content. The first sample is containing the water content of 5%, 10%, 15%, 20%, 25%. You are increasing the water content in each and every sample. But what you are getting, in the first sample you are getting 12 kilonewton of density, in the second you are getting 15, you are getting third you are getting 18, and your fourth you are getting a decreased value of dry density, and again in the fifth you are getting a decreased value of dry density. So what you are doing here is that you have taken 5 samples, you have tested the Proctor test, and you are left with water content and dry density in each and every samples. So you will plot what you will do is that you will plot a curve called compaction curve, and suppose this is x-axis and this is my y-axis, and this on x-axis we are going to represent the water content. It is increasing, so it is my W, and suppose this is your dry density gamma D, and it is increasing in the direction. So suppose this is my you can say 0% of 5%, and this is my 10%, this is 15%, this is my 20%, and this is my 25% of water content that we have taken in the test. Now this is my dry density is 12 kilonewton per meter cube, and this is, you can say here, 15 kilonewton per meter cube. Now it is here 18 kilonewton per meter cube. Now it is 15, you can say here 20, you can just take the difference of 3, so it is 21 kilonewton per meter cube, and it is 23 kilonewton. Just an assumed data, just plot the values in this compaction curve. What is this? This is a compaction curve. This is a compaction curve. This figure is a figure of compaction curve. What is the use of this compaction curve? I will be telling you very soon. So just make this plot. This is the 12 is the here. Then gamma D is 15 for this 10%. 18 for this 15, suppose here, and again 15. It means you will be having the value at this point, and again it is 11. So what you are getting is that you are getting a bell shaped curve. If you will add all these points, you will get a bell shaped curve. You will get a bell shaped curve, and this you will, this 18, here is 18 the maximum dry density. This 18 is this is gamma D max, and this is your, you can say at this point. So this point, I want to erase this compaction curve what I have written here. Just I want to write one very important term is called, this point, this 15 is your OMC. This OMC, this is optimum moisture content. So just write down some points here. So a new term has came here is the compaction curve. It is a curve between water content on x-axis and it is a curve between water content on x-axis and dry density gamma D is on
y axis. This curve helps in finding the optimum moisture content. So a new term has came here, is the optimum moisture content. Optimum moisture content. How can we define this term? It is the moisture content corresponding to the maximum dry density of a soil. So what you can write here is that this is a very important term. It is the maximum water added in the soil for which we are getting maximum dry density of the soil. So for this curve, what will be the maximum dry density? This 18 kilonewton per meter you are seeing here, if you will join this point and this point, this 15% is the OMC here. It is the maximum water added in the soil for which we are getting maximum dry density of the soil. Optimum moisture content is 15% for this assumed curve. And what is the maximum dry density? Gamma D max equals to 18 kilonewton meter cube for this assumed curve. So friends, what is the importance of this compaction curve? This compaction curve is used to find the value of OMC. OMC means optimum moisture content. It means that it is the maximum water added in the soil for which we are getting maximum dry density of the soil. Optimum moisture content for this curve is 15% and the dry density what we are getting, the maximum is the 18. कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप कहीं कोई भी प्रोजेक्ट में कर रहे हो, आप देखते हो कि एक रोलर चल रहा है. रोलर चलने के बाद क्या हो रहा है, उसके पीछे पीछे वाटर की टैंकर होती है. What is the use of the tanker? The tanker is helping for adding the water to the soil for better compaction. So जब किसी प्रोजेक्ट में काम करेंगे, कोई एम्बैंकमेंट बनाएंगे, तो वहाँ पर कितना वाटर ऐड करेंगे जो मुझे बेस्ट डेंसिटी मिलेगी उस सॉइल की, सबसे ज़्यादा डेंसिटी मिलेगी उस सॉइल की, तो मुझे ये कर्व प्लॉट करना पड़ेगा. एक पहले प्रॉक्टर टेस्ट का स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट कैरी आउट करना पड़ेगा, 4-5 सैंपल लेने पड़ेंगे. उसके बाद जब देखेंगे कि जिस समय ये कम हो गया नेक्स्ट एक सैंपल ले लेंगे. उसके बाद देखेंगे वो कम हो गया, मॉइस्चर कंटेंट बढ़ाने के बाद मुझे उसको छोड़ देना है. उसके बाद एक ग्राफ पेपर पे सिंपली एक प्लॉट कर देना है. एक्स एक्सिस पे तुम्हारा वाटर कंटेंट रहेगा आपका एंड वाई एक्सिस पे ड्राई डेंसिटी रहेगा. You will get a bell-shaped curve. This is a bell-shaped compaction curve. This you can see is that this is bell-shaped compaction curve. And what is the physical significance इस compaction curve की? ये मुझे बताता है कि जब भी कहीं compaction करना है तो मुझे कितना amount of water ऐड करना पड़ेगा जो मुझे maximum density मिलेगी. अगर कोई एक इम्पैक्ट बनाना है तो मुझे कितना टैंकर पानी चाहिए, क्या मुझे 10 टैंकर चाहिए, 20 टैंकर चाहिए, तो कितना परसेंट चाहिए वो मुझे ये ग्राफ बताएगा. नॉर्मली अगर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देखोगे तो 15 to 18% ऑफ वाटर फॉर यू कैन से क्ले नेचर ऑफ सॉइल. यहाँ पे मुझे कॉम्पैक्शन करना पड़ेगा. सपोज यू आर मेकिंग अ हाईवे एंड रेलवे एंड द टाइप ऑफ सॉइल इज ऑफ क्ले नेचर, देन यू हैव टू ऐड 15 to 18%. दिस इज अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड इन द फील्ड. 15 से 18% अगर आप ऐड करते हो
तो मान के चलो कि आपकी डेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। बट इस चीज़ को करने के पहले आपको लेबोरेटरी में टेस्ट करके फाइंड करना पड़ेगा कि कितना परसेंटेज ऑफ वाटर मैं डालूंगा कि मुझे मैक्सिमम डेंसिटी यानी कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ सॉइल की मिलेगी। ओके, सो आई हैव रिटन द डेफिनेशन ऑफ द कॉम्पैक्शन कर्व आल्सो एंड द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या है। आई थिंक यू मस्ट हैव enjoyed this lecture. This is the end of the today's lecture. I will be discussing about you can say saturation line, 100% saturation line, zero air word line in the next lecture, and the other test what we have listed here, the modified and the Indian standard, the modified and the heavy compaction, I will be discussing in the next lecture. Hope you have enjoyed this lecture. Thank you very much. Stay at home, stay safe. Thank you. Jai Hind.